Good morning, dear student. Today we'll discuss with you your third chapter of physics. This is the third part of this chapter, okay? And today's topic here, electric circuit. So let's get started now. Electric circuit, beta. What do you mean electric circuit? Okay, so electric circuit means closed path along which electric current flow is called an electric circuit. Okay, like here, this is a closed path, okay, along which electric current flow. यहाँ से क्या हुआ, पूरा जो क्या है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है. ओके, सो दिस इज द क्लोज्ड पाथ. तो यहाँ पे क्या होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. सो यू कैन से ये कंप्लीट जो डायग्राम है, you can say the circuit, okay, or you can say circuit diagram. An electric circuit in the elements such as cell, जो circuit है बेटा उसके क्या क्या components होंगे. First of all cell, second one bulb जो appliances होगा, and switch. Here is a switch, has various elements such as cell, bulb and switch. These elements are connected together. These elements are connected each other. And the wires, here is a wire, this is the wire, ये जो wire है बेटा, okay, wires connecting two elements provide the path for the flow of the electric current. And अब बेटा इसमें कुछ चीजें आती है जैसे open circuit और closed circuit. If there is no break anywhere, देखो ना यहाँ पे कहीं भी बेटा कहीं कोई ब्रेक नहीं है, okay, if there is a no break anywhere in the circuit, it's called closed circuit. तो ये बेटा कैसा सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा, अगर कहीं पे भी ब्रेक नहीं है तो, है ना. सो करंट्स फ्लो इजीली इन द क्लोज सर्किट. फॉर एग्जांपल व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे टॉर्च के अंदर, सो द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द टॉर्च विल ग्लो. तो दिस विल द सर्किट कंप्लीटेड. ओके, इसे बोलते हैं क्लोज सर्किट. नेक्स्ट कंडीशन होती है दिस वन, ओपन सर्किट में. If there is a break anywhere, कहीं पे ब्रेक है बेटा, जैसे यहाँ पे देखिए स्विच ऑफ है, इट मीन सर्किट यहाँ पे ब्रेक है. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप फ्लोइंग. ऑब्वियसली यहाँ पे जब वो कनेक्ट ही नहीं है बेटा तो क्या होगा, करंट क्या होगा, वो फ्लो नहीं करेगा. जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे आप ओपन सर्किट, और यू कैन से ब्रोकन सर्किट. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ, अगर आप टॉर्च को स्विच ऑफ करेंगे ना तो सर्किट बिकम्स ओपन. सर्किट बिकम्स ओपन एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट एंड द टॉर्च स्टॉप्स लाइटनिंग. ओके, so this is the open circuit. Okay बेटा. नेक्स्ट टॉपिक हियर, इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच आप सबने देखा होगा बेटा घर पे. इलेक्ट्रिक स्विच मीन्स a device used to make or break a circuit. Okay, it means when a switch is put in the on position, this one, this is the on position meter. Okay, because this is the connected each other, it means this is the on position. Okay, current flow through the circuit. ओके, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तभी बेटा क्या करेगा, जो करंट होगा वो फ्लो होगा सर्किट में. एंड द बल्ब ग्लो, जो बल्ब होगा, जो कोई भी अप्लायंसेस होगा, फैन होगा, टीवी होगा, कुछ भी होगा, दैट विल वर्क स्टार्ट. सो यहाँ पे बल्ब का एग्जांपल है. सो सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज व्हेन अ स्विच इज पुट इन द ऑफ पोजिशन लाइक इट. ओके, करंट डज नॉट फ्लो. कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे ये जो सर्किट है बेटा ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया. Okay, so current does not flow through the circuit and the bulb stops glowing. जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली जो सर्किट होगा will be broken, टूट जाएगा. या you can say broken circuit और open circuit. जैसे आपने स्विच ऑफ किया यानी ऑफ पोजीशन पे लाए तो so what will be there, current will not flow there, so the bulb stops glowing. Okay, this is the electric switch. Here are some symbol is here. First cell, cell का symbol है बेटा ये. This is the symbol of cell. Okay, the symbol of battery. Battery is just nothing. Battery is
when two or more cell combine together. When two or more cell combine together will form battery. Okay, switch. Okay, symbol of switch, this one, and bulb का जो सिंबल है बेटा वो आप इस तरह से सर्किट में शो करेंगे. ओके, नेक्स्ट हियर मोर ऑन इलेक्ट्रिक सेल. सो बेटा you know very well cells are basic source of, or you can say primary source of electric current or electricity. So electric cell is a sources of electric current. ओके, जो भी करंट है उसका सबसे जो पहला बेसिक सोर्स है वो क्या बेटा, सेल है. सो इलेक्ट्रिक सेल वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एलेजेंड्रो वोल्टा. एलेजेंड्रो वोल्टा वाज साइंटिस्ट दैट उसने सबसे पहले क्या करा, सेल को इन्वेंट करा. ओके, एंड सेल हैज टू टर्मिनल्स, a positive terminal and a negative terminal. Okay, the cell is here, this is a battery. So cell का जो काम है बेटा, सेल का जो फंक्शन है, ओके, when all these chemicals are used up, जो सेल के अंदर होते हैं, जितने सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, the chemical energy of cell convert into electrical energy. Okay, when all these chemicals are used up, the cells stop producing electric current. जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ, है ना, जो उसमें केमिकल है ना सेल के अंदर, वो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करते हैं. बट जैसे ही बेटा जो केमिकल है वो सारा यूज हो जाता है, तो सेल्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट. इन सच केसेस द सेल्स नीड टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू सेल, है ना. The most commonly used cell is dry cell, which is used in torches, wall clocks, portable video games, radios, and various other devices. The dry cell is also known as primary cell. तो dry cell होते हैं. तो dry cell is also known as primary cell and cannot be recharged. Okay. Next topic here, conductor and insulator बेटा, है ना. यू नो वेरी वेल कंडक्टर ना, कई बार आपको बताया बेटा कंडक्टर. सो एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स, अ मेटल इज अ गुड कंडक्टर. In fact, most metals are good conductor. Okay, most metals are good conductor. That is why the filament of a bulb is also made up of metal. Okay. Next one. On the other hand, a material that does not allow electric current to pass through it is called a bad conductor of insulator. Okay, we use both conductors and insulators in our everyday life, है ना. Each one has its own advantages. How? The wires used for carrying electricity are made of conducting materials, okay, and this allow electricity to be transported from one place to another, okay, which conductor. Okay, in our house these wires enclosed in a plastic covering. जो वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं बेटा, उसको आपने कवर कर रखा है, enclosed in a plastic covering. Do you know why? Because as mentioned earlier, electricity could be dangerous if not handled properly. अगर आप if not handled properly, if someone accidentally touch a bare wire carrying current, he will get electric shock. So the plastic is an insulator. It prevents us from getting electric shock. Okay, the bodies of electrical switches, sockets, plugs, and handles of electric iron are all made up of insulating materials. Okay, so thank you class.